Warm welcome, viewers. You're watching 7 at 7, the only news bulletin where I curate the day's top 7 stories for our viewers. I'm Preeti Choudhry, and these are the headlines. Agnipat protests rage on. Bharat Bandh today. Netas also hijacked the protest. Congress stages rail roko in capital. Massive traffic jams choke Delhi NCR as borders are shut. Aam Aadmi caught in Agnipat crossfire. Indian Army put out Agnipat recruitment notification. Registration to open from July. Army Chief says will not roll back the reform. It's an India Today exclusive. स्कीम बहुत डिटेल डेलिब्रेशंस के पश्चात अपनाई गई है, तो इसमें रोल बैक और कल परसों भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा है, इसका कोई सवाल नहीं है. Modi's mega Agnipat defense. Prime Minister allays fears over the scheme, says today's decision are the reforms of tomorrow. Rahul Gandhi's round 4 of ED grilling underway after 30 hours quizzing in 3 days. Rahul accompanied by sister Priyanka to agency's office. Congress continues its protest to meet president. Big breakthrough in Moosewala murder case. Bolero module of 6 gangsters busted. The singer was fired at with an AK-47. India Today leading the Moosewala killing probe news break. Daring rescue operations gets 9 people out of a stranded cable car midway. Efforts underway to evacuate 2 more in Himachal's timber trail Parwanoo. Landslide and power outages as deluge ravages Assam, leads trail of destruction in the flooded state. Nearly 40 killed so far and 42 lakh affected. We have top story at 7 and 7. There's been a breakthrough where the Moosewala's murder is concerned. The latest that is coming in, viewer, seems to suggest in this big breakthrough on Sidhu Moose Wala's murder, the cops have identified 6 shooters and have arrested the main one. The main executioner and the man who gunned down Moosewala has been arrested by the Delhi Special Police Cell. Out of the 6 arrested, gangster Kashish was driving the Bolero along with gangster Priyavrat Fauji and Ankit Sirsa. The Corolla was being driven by gangster Keshav, while gangster Jagdeep Rupa and Manpreet were sitting in the car. The Corolla overtook Moosewala's car and Mannu fired at him with an AK-47. Fauji led the shooters and was in touch with Canada-based gangster Goldie Barar for Moosewala's murder. 3 to 4 hand grenades and AK-47s have been recovered from killers. Priyavrat Fauji was the module head of shooters. Apart from him, 6 other shooters were arrested while a large number of arms and explosives have been recovered. जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था. तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और उनके 2 फ्रेंड्स थे. तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे. तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया. करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी. तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई. हमारी स्पेशल सेल की टीम्स को इस घटना का पता चला तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम करना शुरू करा. हमारी सारी रेंजेस की टीम्स, नॉर्दर्न रेंज, न्यू दिल्ली रेंज, सदर्न रेंज, साउथ वेस्टर्न रेंज, CI रेंज, सब ने इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव काम किया. हमारी कुछ टीम तो ऐसी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 18-19 दिन से जो लगातार बाहर इसमें कैंप कर रही थी और
6 शूटर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो 6 के 6 जो अभी है उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको एस्टैब्लिश कर पाए हैं। सिद्धू मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले 2 शूटर को स्पेशल सेल ने गुजरात के मुद्रा से गिरफ्तार किया। आप देख पा रहे हैं स्पेशल सेल की गिरफ्त में प्रियव्रत फौजी मेन शूटरों का जो हेड था उसे गिरफ्तार किया गया है। आप देख पा रहे हैं ये प्रियव्रत है और उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ कशिश जिसने गोली चलाई थी उसको भी गिरफ्तार किया गया, जबकि केशव पंजाब का रहने वाला है, उसने फैसिलिटेट किया था। ये सभी दरअसल बुलेरो गाड़ी में सवार थे। 2 गाड़ियां थी जिसमें हमलावर थे, कोरोला कार में और बुलेरो गाड़ी में। बुलेरो गाड़ी में प्रियव्रत फौजी सवार था। इन लोगों ने भी फायरिंग की थी और स्पेशल सेल ने पूछताछ में खुलासा किया है कि AK-47 और पिस्टल से भी फायरिंग हुई थी। इसके अलावा इनसे पूछताछ में हरियाणा से हैंड ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर वो बरामद हुआ। तो एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और पुणे पुलिस लगातार गिरफ्तार करने में लगी थी, लेकिन फाइनली 2 शूटर जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई थी उनको गिरफ्तार कर लिया है और इनसे लगातार पूछताछ जारी है। I want to cut across right now immediately to my colleague Arvind Ojha, who's been tracking details and getting you the first exclusives on a story that is continuing to develop in terms of the sordid murder saga of Sidhu Moose Wala. Arvind, can you take us through the latest trajectory, the latest revelation? देखिए प्रीति, जो अभी सोर्सेस से इंडिया टुडे को जानकारी मिली है उसके मुताबिक 15 दिन में 9 बार रेकी की थी सिद्धू मूसेवाला की इन शूटर्स ने। और जब ये शूटर्स रेकी कर रहे थे उस दौरान भी इनके पास AK-47 जैसी राइफल्स, उसके अलावा ऑटोमेटिक पिस्टल्स वो थी, उसके साथ हैंड ग्रेनेड भी था। और जो कनाडा में गोल्डी बरार जो पूरा शूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा था उसने कहा था कि 29 तारीख को जिस दिन वो निकला था सिद्धू मूसेवाला, उस दिन साफ साफ गोल्डी बरार ने कहा था कि हर हाल में सिद्धू मूसेवाला की जान लेनी है और अगर सिक्योरिटी होती है तो उसके बाद जो ग्रेनेड है वो ग्रेनेड फेंक कर उसको मारना है, लेकिन हर हाल में मारना है। दरअसल गोल्डी बरार इसलिए भी डेस्परेट था क्योंकि कई महीनों से रेकी की जा रही थी, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी सिद्धू मूसेवाला के पास काफी ज्यादा थी पंजाब सरकार की, उसकी प्राइवेट की, इस वजह से जो शूटर्स है वो अटैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गोल्डी बरार ने आखिरकार कई दिनों तक जब रेकी की मानसा में रहकर शूटर्स ने, उसके बाद वो ग्रेनेड इनको दिलवाया गया और सीधा इंस्ट्रक्शन था कि अगर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है तो ग्रेनेड फेंक कर वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करना है। तो ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है प्रीति। और दूसरी ये कि अब लोकल गैंगस्टर वो इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ साथ ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर लेकर चल रहे हैं, ये काफी एक डेंजरस बात है और काफी चिंता की बात है ये। Arvind, thank you for joining us with the latest details, and you're right to in fact worrying the kind of modus operandi that these gangsters were following, which involved grenades and grenade launchers. I want to now take you to the other big development on the sidelines of the Sidhu Moose Wala case, and viewers, that comes from the fact that now the spotlight is on director Karan Johar. Was he on the hit list of gangsters also? Arrested accused Saurabh Mahakal, aide of gangster Lawrence Bishnoi, has revealed that singer Moosewala's murderers tried to give extortion threats to filmmaker Karan Johar. Mahakal made many claims in the interrogation of Pune and Mumbai police, and one of these claims was that filmmaker Karan Johar was on the radar of Lawrence Bishnoi's gang. However, this claim is yet to be ascertained and verified by the cops. Mahakal has claimed that the plan was to extort 5 crores from Johar, but as per cops, it's possible that Mahakal was just trying to mislead the police. Earlier, Mahakal had also claimed 3 accused had come to Mumbai for giving threat to Salman Khan. But when the Mumbai police verified these claims, it found out that these accused are in jail for the last 6 months.
Viewers, let's cut across to the big developing story today. A Bharat Bandh call was made. No organization or political party actually took ownership of it. The Bharat Bandh in solidarity of the protests that have been taking place against the government's tour of duty recruitment scheme, Agnipath. This was what was witnessed today. Massive traffic jam. Delhi's borders choked again. Hundreds of trains cancelled after rail roko. Aam Aadmi bears the brunt of the political fight over Agnipath. And Congress MP Rahul Gandhi is grilling by ED in Herald scam case for the 4th time. Thousands of Delhi NCR commuters were caught in Bharat Bandh crossfire on Monday morning, as cops set up barricades to prevent troublemongers to pour into the capital, after reports that Parliament House and residence of President and Prime Minister Modi may be targeted. Congress workers stopped trains at New Delhi railway station, causing massive inconvenience. They also stalled the traffic at Delhi's Connaught Place, causing traffic jams. In Karnataka, Congress workers burnt tires as a mark of protest. More than 500 trains were cancelled and over 400 trains were affected due to the Bharat Bandh call. The authorities beefed up security at railway stations. This is the outer ring of the Patna railway station. You can see the khaki, sea of khaki right behind. And on this side, this is the rapid action force that is ready for any eventuality. प्लेटफॉर्म पर तो जो है मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो जीआरपी के जवान हैं, आरपीएफ के जो जवान हैं, उनको भी आज अलर्ट मोड पे रखा गया है. तमाम लोग आपको दिख जाएंगे जो सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर आज तैनात हैं. The protests are no longer about Agniveers alone. The Congress sensing an opportunity to firewall Rahul in Herald case using the term. Have Netas hijacked the Agnipath protest? With Mausami Singh in Patna, Ravish Pal Singh in Bhopal and Karthik in Bengaluru, Bureau Report, India Today. Moving on, viewers, now the Prime Minister speaking in Karnataka tried to allay fears where the Agnipath scheme is concerned by saying that reforms are necessary and they lead to new, better milestones. Listen in. बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था. कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है. रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है. Viewers, it was day 4 of Rahul Gandhi being grilled by the Enforcement Directorate. As we speak, the interrogation by the ED continues. He's giving his submissions on the case that he has involving National Herald. A delegation, meanwhile, of the Congress party met President Ramnath Kovind and submitted a memorandum in connection to the Rahul Gandhi's summoning by the ED. Congress party is also, meanwhile, staging a nationwide protest against the government over the question of its former president. According to ED sources, Rahul Gandhi told the probe agencies last Wednesday that late Congress leader Motilal Vora was the authorized signatory for the financial transactions between AJIL and Young India Private Limited. We have given to the President of India 2 memoranda. The first relates to the ill-conceived, misguided Agnipath scheme. The scheme is a completely ill-conceived scheme. None of the arguments put forward are justified. Every one of them has been blown to pieces. And every day the government comes back with some change or some concession and calls it a pre-planned change.
If it's a pre-planned change, why did you not announce it in the original scheme? जो 13, 14, 15 3 दिन जो लगातार हमारे पीसफुल सत्याग्रह था, जो कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उस सत्याग्रह में शामिल थे, लेकिन उनको सताया गया, उनको 12-12 घंटे तक हमारे नेताओं को 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर यूपी बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे अलग अलग जगह के रखकर कानून के खिलाफ, और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है किसी व्यक्ति को बगैर आप उसके ऊपर केस करें या बगैर कोई नोटिस दिए उसको 12 घंटे 14 घंटे आप डिटेन नहीं कर सकते। अगर राज्यसभा के मेंबर को आप डिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं तो इत्तला है, ये कुछ नहीं हुआ। तो हमारे एक तरफ हकूक का हनन हुआ है, देश का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार है, उन पर कार्रवाई होती है और उनके भ्रष्टाचार की जवाबदेही तय होती है, तो कांग्रेस पार्टी विक्टिमहुड कार्ड निकालती है। केवल और केवल अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं, तो बार बार कभी कानून के कॉलर पर हाथ डालते हैं और कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं और कहते हैं कि जांच भी नहीं होनी चाहिए इस 2000 करोड़ के बड़े घोटाले की। I'll cut across to my colleague Munish Pandey, who's joining us right outside the Enforcement Directorate's office. Munish, the last 3 times we had seen a continuous grilling which went on to the late night where Rahul Gandhi was concerned. What's the latest today? Yeah, well, Preeti, remember last week Rahul Gandhi was questioned for almost 3 days and ED has questioned him for almost 30 hours. But what ED sources have told India today that so far they have been able to cover only 50% of the questionnaire and they will still need at least 2 days to complete the questioning. Now, for the delay they have told, the sources have told India today that there are some questions which are taking time. Rahul Gandhi is taking time to answer those questions and that is why there is a delay. As far as today's questioning is concerned, we have been given to understand is that there were a few questions where they wanted Rahul Gandhi to revisit, reconsider his answers, and also what happened today is that Rahul Gandhi was confronted with some fresh set of documents pertaining to AJL and Young Indian Private Limited. There were documents related to transactions and also about his association with Young Indian Private Limited. We have been given to understand is that only after 9:30 Rahul Gandhi may leave for today, but whether he'll be called tomorrow or not, that is still to be seen. All right, appreciate you joining us, Munish. We're going to come back to you for further updates on that story. Meanwhile, let's cut across to the other big development as it takes place, viewers. The Prime Minister on a 2-day visit to Karnataka, inaugurating multi-crore projects. Also, it happens a year before Karnataka goes to vote, before Karnataka elections. Ahead of Prime Minister's visit, Chikmagaluru cops detained KPCC Kisan Cell President and other Congress Farmer Association members. They were planning to travel to Bengaluru and stage a protest against Prime Minister Modi. Politics further escalated when the Congress questioned the shutting down of schools ahead of Prime Minister's visit. Congress MLA Anjali Nimbalkar claimed that education was a joke under the BJP government. On the first day of his visit, Prime Minister launched a multi-crore project in Mysuru and Bengaluru. जीवन और कारोबार को आसान बनाने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोल होता है। कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार इस दिशा में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने कर्नाटका में 5000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आज ही बेंगलुरु में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। नेशनल हाईवे के माध्यम से कर्नाटका में कनेक्टिविटी और रोजगार के हजारों अवसर तैयार करने के लिए इसी वर्ष
लगभग 35,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लगाने वाली है। मुझे खुशी है कि कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार होने से ये प्रोजेक्ट तेजी से जमीन पर उतर भी रहे हैं और पूरे भी हो रहे हैं। साथियों, रेल कनेक्टिविटी का तो कर्नाटका को और भी अधिक लाभ बीते 8 वर्षों में हुआ है। मैसूरू रेलवे स्टेशन और नागनहल्ली स्टेशन के आधुनिकीकरण का जो काम शुरू हुआ है, वो यहां के किसानों, यहां के नौजवानों सभी का जीवन आसान बनाएगा। All right, viewers, let's cut across right now to Parwanoo, Himachal Pradesh, with an eerie reminder of what's happened before many times over. 11 people in all were stuck on mid-air in Himachal's Solan district after a cable car malfunctioned. The incident happened at Parwanoo Timber Trail after a technical glitch occurred in the ropeway. NDRF teams were called in to assist the rescue operation. Total 9 people, 5 women, 4 men were rescued. 2 are still stranded. District administration engaged in the rescue said that all the stranded people are tourists from Delhi. Similar accidents had taken place in '92 while the haulage cable broke near the docking station and the cable car carrying 11 passengers slid backwards. हम लोग 1 घंटे से टिम्बर ट्रेल की ट्रॉली में फंसे हुए हैं, ऊपर से नीचे आ रहे थे और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो हम लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। इसमें बुजुर्ग लेडीज है और बुजुर्ग लोग हैं और उतारने की बातें कर रहे हैं हमारे को, और कभी कहते हैं रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं मेरे पैर में दर्द है। हम लोगों की एज भी है, देखो हम लोग नहीं कर पाएंगे रस्सी से उतरना नीचे, और ये लोग कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। Hotel administration launched the rescue. The local administration also reached on the spot. NDRF teams were also called, but till the NDRF team reached the spot, most of the people were rescued. 3 decades ago, similar number of people were struck mid-air when trolley got struck. It seems the hotel administration has not learned any lesson from the past mistakes.